Hello aspirants, welcome to CSAT FIT 2024 course and this is class 8. In this class we are going to discuss about number of zeros at the end of an expression. So in exam questions will be asked in this form. How many zeros are there at the end of following product? Okay, so if this product is multiplied, so we get a number. So at the end of the number, how many zeros would come? So this kind of questions is asked. So if we see in UPSC CSAT paper, there is one question on this topic that is asked in 2020. Okay? And apart from that, if we see UPSC CDS paper, there are questions asked from this topic in every 1 year or every alternative year. Okay? So CDS happens 2 times in a year. So every alternative paper one question is asked from this topic, and this question is asked in SSC CGL and EPFO type of exams also. So this is important. ठीक है, so ये करते हैं. So this is question asked in CSAT 2020. ठीक है, so let's do this. So this is going to be part 1 of number of zeros, and I will take one more class on number of zeros. ठीक है, in next class we will discuss questions asked in CDS and other exams. ठीक है, इनमें इस टॉपिक से जो पूछा हुआ है क्वेश्चंस वो देखते हैं. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा हुआ है CDSE में which can be asked in UPSC exam. So let's understand the basics of number of zeros concept. So let's understand basics. So let's understand basics. ठीक है, so basics समझते हैं पहले. So if we multiply number, say 3 multiplied by 5, that is 15. Okay, then if we multiply 4 with 4, then that is 4 4s are 16. And if we multiply numbers like 2 into 3 into 4, then it is 2 3s are 6 and 6 4s are 24. So if we see here, there are no zeros at the end product. So 1 and 5 है, 1 6 है, 1 2 4 है. So there are no zeros in the product. Now let's see following numbers. Let's see 2 into 5, if we multiply we get 10. Here there is 1 0 towards the end of the product. Okay, then 2 into 5 into 2, if we multiply 5 2s are 10, 10 2s are 20. Again there is 1 0, and if we multiply 5 into 2, that is 5 5s are 25, 25 2s are 50. So 50, again there is 1 0 towards the end of the product. Okay, so now if we multiply 2 into 5 into 2 into 5, then it is 5 2s are 10 and 10 2s are 20, 20 2s are 25s are 100. So 100 is there. So there are 2 zeros, and if we multiply 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5, then what we get is, say इधर तक 100 हो गया, 100 2s are 200, 200 into 5 is 1000. So there are 3 zeros towards the end of the product. So इधर से हमें we are getting a hint, that is here 2 into 5, 1 2 into 5 is there, so 1 0. Okay, here 2 into 5, 1 2 into 5 is there, so we are getting 1 0. And again here 2 into 5, 1 2 into 5 is there, we are getting 1 0. Here 2 2 into 5, so this one is 1 and this one is second, 2 into 5, so we are getting 2 zeros towards the end. Here we are getting 3 2 into 5s. ठीक है, 1 2 and 3, so we are getting 3 zeros. So by using that, what we are getting is, ठीक है, so to count, so write it as a note. It is very important to count number of zeros at the end of
a product, at the end of a product, we need to count number of 2 into 5s occur in that प्रोडक्ट. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. सिर्फ ये पॉइंट याद हो गया, वी कैन इजीली डू. सो टू काउंट नंबर ऑफ जीरोस, एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट वी नीड टू काउंट नंबर ऑफ 2 into 5s occur in that product. ठीक है, सो दिस इज द core of this topic, number of zeros. So let's see one more example. Say that is 2 into 5 into 3 into 2 into 4. So that is product is 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 2s are 60, 64s are 240. So how many zeros are coming? 1 0 because there is only 1 2 into 5. ठीक है, so 1 2 into 5, so we are getting 1 0. Now let's see the product of this one. 2 into 5 into 3 into 2 into 1 into 2 into 5, that is equal to, so if we see, no need to do the entire multiplication. See, number of 2s are there and number of 5s are there. Say here 2 into 5 1 hai, 2 into 5 1 hai, and it's not 2 into 5 coming simultaneously. So let's count number of 2s, that is 1 2 and 3 2s are there. So 2s कितने हैं? So that is 2 to the power 3. ठीक है, then 5s देखो 1 and 2. So 5s is 5 square. So प्रोडक्ट में इसमें एक इसी फॉर्म में 2 to the power 3 into 5 square. So now number of 2 to the power 3 is we get is the least number on both numbers, that is 2. So 2 to the power 2 into 5 पॉसिबल है. सो इसीलिए एंड में 2 zeros आएगा. ठीक है, एंड में 2 zeros आएगा. सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. सो वी नीड टू गेट इज नंबर ऑफ 2s एंड नंबर ऑफ 5s. सो नंबर ऑफ 2 into 5s इज इक्वल टू आएगा. सो लेट्स सी ए क्वेश्चन, यू विल गेट. सो दिस इज द बेसिक. सो वी नीड टू गेट 2 into 5s कितने. क्वेश्चन देखते हैं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. सो क्वेश्चन, नोट इट डाउन. That is 15 into 20 into 30 into 45. So इस एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ zeros towards the end of the expression निकालना है. So that is 15. So 15 can be written as 5 into 3. ठीक है, why we are writing is we need to break down every number into 5s and 2s. So 5 into 3, this can be not be further breakdown. So 20 can be written as 10 into 2. ठीक है, then again 10 can be written as 5 into 2. 5 2s are 10. So 10 can be. So we need to break down in the form of 2s and 5s because we need to count. So let's do this question, you will easily understand. Now 30 can be written as 10 into 3 and 10 can be written as 5 into 2. So 45 can be written as 9 into 5 and 9 further written as 3 into 3. Further we cannot break down. Now what we need to do, count down number of 2s and number of 5s. So 2s here is, so this is 1 2, this is second, this is third. See, so 2s है 3, 2 to the power 3. So 3 2s are there in the entire expression. ठीक है, then count number of 5s. So number of 5s are 1 5, 2 5s and 3 5s and 4 5s. So 5s we will write as into 5 to the power 4. So in this, how many 2 into 5s, we need to get 2 into 5s कितने. So 2 into 5s कितने पॉसिबल है, जिसी भी पावर में कम होता है उतने पॉसिबल होता है. बिकॉज देखो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज 2 into 5, ठीक है, into 2 into 5 into 2 into 5 into 5. ठीक है, यही होगा ना, 5 एक एक्स्ट्रा है, सो 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा. ठीक है, 2 into 5 3 है. सो इट इज नंबर ऑफ जीरोस इज 2 3 1 2 3
2 into 5s are possible. So 3 zeros. 3 zeros. So number of zeros in the expression, that is 3 zeros in the expression. So this is the answer. So in this expression, if we multiply it, so last 3 digit would be 0. लास्ट 3 डिजिट है वो 0 हो जाएंगे. सो टू गेट दैट वी नीड टू गेट पूरे एक्सप्रेशन में कितने 2 into 5 पॉसिबल है. ठीक है. सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. सो क्वेश्चन इज 125 into 128 into 250. ठीक है. सो इसमें लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट जीरोस कितने आता है, दैट इज द क्वेश्चन. सो लेट्स डील विथ इट. सो 125 कैन बी रिटर्न एज, so we need to write everything in the form of 2s and 5s. It can be written as 25 into 5 and 25 can be written as 5 into 5. So no 2s are possible in this expression. Then 128 can be written as 64 into 2. Here we are breaking in the form of 2. Then 64 can be written as 32 into 2. ठीक है. Then 32 can be written as 16 into 2. ठीक है. Then 16 can be written as 8 into 2 and 8 can be written as 4 into 2 and 4 can be written as 2 into 2. ठीक है. So then ये एक्सप्रेशन यही हो गई ना, into, so 250 can be written as 25 into 10. ठीक है. Here 10 can be written as 5 into 2 and no further simplification of this. So and 25 can be written as 5 into 5 and further no simplification. So now count number of 2s and number of 5s. So let's count number of 2s. So number of 2s here is, so ये 25 में जो 2 आता वो नहीं, the unit 2s we need to count. So number of 2s here is 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So number of single 2 digits we need to count. ठीक है. So here then 1 2 is here. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 2 to the power 8. So 2 to the power 8 into, now count number of 5s. Number of 5s is 1, 2 and 3. Then 4, 5 and 6. ठीक है. So into 5 to the power 6. So number of zeros is, जिस पावर में 2 into 5 जिसमें कम पावर होता है वो होता है. सो वो क्यों लेता है कम पावर वाला, बिकॉज 2 into 5 एज ए होल 6 पॉसिबल है इंटू 2 to the power 2. ठीक है. सो इतने पॉसिबल है. सो 2 into 5 कितने पॉसिबल, 6. सो देर आर 6 zeros टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो 6 zeros आएगा टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, बाकी सारे नंबर्स आएंगे. ठीक है. सो यू गॉट द क्लैरिटी. वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ 2 into 5s. सो नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट नंबर ऑफ 2 into 5s. ठीक है. सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. ठीक है. सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. सो ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर. ये वाला सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस वन. ठीक है. सॉल्व दिस वन, so you will get more clarity. So question is how many zeros are there at the end of the following product, that is product is 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45 into 50 into 55 into 60. So we need to count number of 5s. So ये 5 ones are 5 है. So this can be written as ये इस में लिखते हैं. So 2 into 5. ठीक है. Then 15 can be written as 5 into 3. Further we cannot simplify. Then 20 can be written as 4 into 5 and 4 can be written as 2 into 2. ठीक है. So 25 can be written as 5 into 5 and 30 can be written as
6 into 5 and 6 can be written as 2 into 3. ठीक है, then 35 can be written as 7 into 5. Then 40 can be written as 10 into 4. ठीक है, 10 can be written as 2 into 5 and 4 can be written as 2 into 2. Then 45 can be written as 9 into 5. ठीक है, 9 into 5 is 3 into 3. So हमें कुछ लेना देना. Then 50 can be written as 10 into 5. Then 10 can be written as 5 into 2. Then 55 can be written as 11 into 5. ठीक है, then 60 can be written as 12 into 5. 12 is 2 into 6 and 6 is 2 into 3. So now count number of 2's. So number of 2's is 1, ठीक है, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, then 8, 9, 10. So 2 to the power 10 into, now count number of 5's. So number of 5's are 1, 2, ये भी 5 है. So see this one, don't forget to count this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 5 to the power 14. So that is कम कितने, so 10 है, so 10 would be the answer. So 2 to into 5 कितने possible है, वो 10 possible है. So 10 zeros towards the end of the product. So answer for this question is going to be A, that is 10. ठीक है, so A, that is 10 is the answer. ठीक है, हो गया. So that's how we need to count. So to get how many zeros are there at the end of the product, we need to find out number of 2 into 5's possible. ठीक है, 2 into 5's कितने possible आता है वो कर लिया तो ये आ जाएगा. So let's see another model here. So question का अब let's discuss next model, that is consecutive numbers का. If it is consecutive series, if the series is consecutive, then number of zeros towards the end of product, number of zeros towards the end of product. ठीक है, consecutive series. So देखते हैं. So consecutive series, first what is consecutive series? So consecutive series is where series is difference is common, that is say 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So this is consecutive series because here gap between each number is 1. So 2, 1. So here 1, here 1. So consecutive series का common difference आता है, that is consecutive series. ठीक है, so let's see questions based on consecutive series. So this is second concept. So consecutive series आया तो number of zeros towards the end of product कितना आया था. So let's do a question. So question is number of zeros towards the end of product of 1, 2, 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. ठीक है, so for consecutive series, so we normal method is how we do. So normal method we know, normal method में we know कि by 2's count करना है. So here it can be written as 2 into 2. So 5 is 1 into 5 only, then it is 2 into 3. 7 is we cannot break down, so 8 is 4 into 2 and it is 2 into 2, 4. Then it is 3 into 3, we cannot break down, so it is 2 into 5. So count down number of 2's. So number of 2's are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 2 to the power 8. Then count number of 5's. Number of 5's is 1 and 2. Only 2 5's into 5 square. ठीक है, so कितने zeros आएगा? Zeros is 2 zeros. 2 zeros because 5 to the power
2 है, so there are 2 into 5s are possible, 2 into 5s are possible, इसीलिए 2 zeros would be at the end of the product. ठीक है. अब now imagine if the product is say 10 numbers, then we can calculate easily, but imagine if the product is like this. So write down the question. If the product is like this, like 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on into 48 into 49 into 50. So if the product is like this, so then now it is not possible for us to count number of 2s and number of 5s for each thing. Like the way we are doing here, it is not possible for this series because 50 तक हर नंबर का 2s कितने आता है, 5 कितने आता है, वो पॉसिबल नहीं है. So now how to do this kind of questions? So how to solve this kind of consecutive series में जो प्रोडक्ट किया तो लास्ट में कितने जीरोस आएगा. सो हाउ टू डू दैट? सो फॉर दैट देयर इज ए टेक्निक, दैट इज, सो दिस इज consecutive series and this technique can be used in consecutive series only, not for normal series. ठीक है, consecutive series, then for consecutive series to find number of fives, so first is to find number of fives in the series. So number of fives in the series, then you will divide the last number of the series by 5. So here last number of the series is 50. So 50 divided by 5, because we need to find number of fives. So that is 5 ones are 5, ठीक है, and 5 zeros are 0. So रिमाइंडर 0 आता. सो 10 इज अ क्वेश्चन. सो ये 10 हो गया. नाउ अगर इस 10 है, सो दिस 10 ऑल्सो यू नीड टू डिवाइड बाई 5. सो 10 5, सो 5 2s are 10, so 0, and this 2 cannot be further divided. So we are here dividing this 10 with 5. So now number of 5s would be this 10 plus this 2. ठीक है, जो भी क्वोशंट आता है दैट इज, सो नंबर ऑफ फाइव्स हियर इज 10 प्लस 2, दैट इज 12 फाइव्स आर देयर. ठीक है, 12 फाइव्स आर देयर, सो दैट इज 5 to the power 12 आएगा. ठीक है, दैट, सो विद दिस वी आर गेटिंग नंबर ऑफ फाइव्स. सो देन फॉर नंबर ऑफ टूस, टू फाइंड नंबर ऑफ टूस, ठीक है, वी नीड टू डिवाइड लास्ट डिजिट दैट इज 50 बाई 2. सो टू फाइंड फाइव्स वी आर डिवाइडिंग 50 बाई 5. टू फाइंड टूस वी नीड टू डिवाइड 50 बाई 2. सो दैट इज 5 2s are 4, 1 0 and 2 5s are 10. सो दैट इज 25. अब 25 जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक इसको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा. सो दिस 25 वी नीड टू डिवाइड. सो 25 देन 2. So 2 1s are 2, so 5, 2 2s are 4, so that is remainder 1. अब हमें इस रिमाइंडर से कुछ नहीं लेना है. so जो भी फिर 12 आएगा, 12 को फिर 2 से करना है. so 12 divided by 2, 6 are 12, ठीक है, 0, then 6 को भी करना पड़ेगा. 6 2 3s are 6, so remainder 0. माइनस 0. देन फिर 3 को भी करना पड़ेगा जब तक डिवाइड होता. सो 3 डिवाइडेड बाई 2, 1s are 2, सो रिमाइंडर इज 1. सो अब 1 को नहीं कर सकते. सो दिस वुड बी, सो व्हेन वी ऐड ऑल दिस, दैट इज 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, दैट वुड बी नंबर ऑफ टूस. सो नंबर ऑफ टूस हियर इज 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 plus 2, that would be 3 plus 1, sorry, so either 1 आ गए ना quotient, so 3 plus 1, so that is 10 10 17, then 3 4, so 47, so that is 2 to the power 47, 2 to the power 47, so that is 5 to the power 12 into 2 to the power 47. and we know जिसमें
कम पावर है वो आएगा. सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 12. अब ये दिस इज हाउ वी नीड टू डू. बट हमें पता है इसमें भाई, इस सीरीज में हमें पता है टूस तो ज्यादा होंगे ही होंगे, बिकॉज फॉर इधर भी 2 आएगा, 4 इज 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है. 50 इज 2 इंटू 25, 48 में भी 2 इंटू 24, देन 24 में 2 इंटू 12, then 2 into 6. So we know 2's are going to be more. So the moment we calculate number of 5's, then we will get the answer. So 12 है, so 12 would be the answer. ठीक है. So let's do one more question. We will get more clarity. ठीक है. We will get more clarity. Let's do next question, that is number of zeros towards the end of product 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on into 99 into 100. So we know this is a consecutive series. Consecutive series है. So consecutive series में to find number of zeros we need to divide last number by 5. ठीक है, last number by 5, that is so 100 divided by 5. So 5 2's are 10 and 0, so 0, 100. So 20, so 20 is divisible, 20 can be further divided by 5. So 20 को divide करो 5 से फिर से. So 20 4's are 5 4's are 20, so 0. So अब 4 है, 4 cannot be further divided, right? 4 cannot be further divided by 5 because so ऐसा समझ लो जब तक 5 से बड़ा नंबर इधर आएगा डिवाइड करना है, 5 से कम नंबर आएगा तो डिवाइड नहीं करना है. ठीक है. So number of fives is 20 plus 4, that is 24. So 24 is number of fives in this expression, and we know twos are going to be more because 1 2, then 2 into 2, ठीक है, then 6 2 into 3, ठीक है, then 7, फिर 8 is 4 into 2, that is 2 into 2. ऐसा टूस बहुत आएंगे. सो द मोमेंट वी नो कि भाई टूस तो बहुत होंगे, सो 5 से ही फर्क पड़ता है. सो 5's आर व्हाट, पावर 24. सो 24 जीरोस होंगे इस प्रोडक्ट में एंड करें. सो लास्ट 24 डिजिट्स आर गोइंग टू बी जीरोस इन दिस प्रोडक्ट. अगर टूस भी करना है, सो टूस नंबर ऑफ टूस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे. सो लास्ट नंबर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करना है. सो दैट इज 50 सर 100, ठीक है, देन 50 को फिर 2 से करेंगे. सो हियर 5 करना है तो 5 से कर रहा है, 2 करना है तो 2 से फाइंड. सो दैट इज 25. सो 50 0, फिर 25 को करेंगे 2 से, ठीक है, 25. सो 25 2 से डिवाइड, सो दैट इज 12 सर 24. सो 1 इज रिमाइंडर. सो 12 को फिर से करना है, 12 2, सो 2 6 जार 12 0, देन 6 आ गया. सो 6 2 जार 3 जार 6, ये 3, फिर 3 को करेंगे 2 से, 1 जार 2, रिमाइंडर इज 1. सो ये भी आ गया 1. सो 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, ये आएगा. नंबर ऑफ टूस काउंट करना है तो ये सब काउंट करने से नंबर ऑफ टूस आएगा. अब हमें पता है भाई 5 से कम है, 24 है, सो 24 वुड बी द आंसर. सो नो नीड टू डू टूस ऑल्सो, ठीक है. सो देन लेट्स सी वन मोर एक्सप्रेशन, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है. सो लाइक दिस वी नीड टू सॉल्व. सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 2 into 4 into 6 into 8 into so on into 88. So number of zeros towards the end of the product. अब देखो here the number is series, that is even number series. So here we can write this as 1 into 2 and 4 as 2 into 2 and 6 as 2 into 3 and 8 as 2 into 4, ठीक है, so on. then सर जैसे 10 है, so 10 can be written as 2 into 5, ठीक है, into, so into आएगा सब में, into so on into, so this is 2 into 44. so from this what we are getting is
जैसे इसको लिखो 2 into 1, 2 into 1, so we are getting 2 here, 2 2 2 2 2, so इस 2 को बाहर निकाला प्रोडक्ट से, that would be 2 to the power 44 because this 2 is coming 44 times, ठीक है, 44 times 2 आएगा, ठीक है, because every one प्रोडक्ट डिजिट हैज 2, every one number, so 2 into 44 into, ठीक है, देन बचे क्या है, देन सीरीज आएगा 1 इंटू, सो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन इंटू 44, ठीक है, सो ये प्रोडक्ट आएगा। अब ये हमें पता है दिस इज कंसेक्यूटिव सीरीज, कंसेक्यूटिव सीरीज है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सीरीज है। सो फॉर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स वी नो हाउ टू फाइंड फाइव्स, सो बिकॉज वी नो कि भाई इसमें नंबर ऑफ फाइव्स हमें एट द एंड जीरोस के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू फाइव्स चाहिए, सो 2 44 है ऑलरेडी, और इसमें भी कुछ 2s है एंड इसमें भी कुछ 5s है, सो लेट्स फाइंड नंबर ऑफ फाइव्स, सो नंबर ऑफ फाइव्स इज 44 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 5 5 8s आर 40, रिमाइंडर इज 4, सो अब 8 को फिर से 40 करना है 5 से, सो 5 5 1s आर 5, रिमाइंडर इज 3, सो 8 प्लस 1, सो 9 5s आर देयर, सो 5s कितने, 5s आर 5 टू द पावर 9, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड नंबर ऑफ 2s इन दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो, हमें इधर से पता चला भाई 2s तो 44 है ऑलरेडी, सो वी नो द आंसर, आंसर इज नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस एक्सप्रेशन वुड बी 9 zeros, 9 zeros है, we know the answer, but let's also find number of 2s also, that is 44 by 2, that is 22, 22 2s are 44 0, then 22 को फिर से 2 से करेंगे, that is 11s are 22 0, then 11 को फिर से 2 से करेंगे, 5s are 10 1 आएगा, so 5 को फिर से 2 से 2s are 2 2s are 4, so रिमाइंडर 1, so इधर कितना 2, ठीक है, देन 2 2 से करेंगे, 1s are 2 0, so it is 22 11 5 प्लस 2 प्लस 1, सो इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तब आएगा नंबर ऑफ 2s, वी नो, सो नंबर ऑफ ऐड किया तो वो आ जाएगा, दैट वुड बी, so this expression is 2 to the power 44 into 5 to the power 9 because 9 5s are there into 2 to the power 41, अगर इन सबको ऐड किया तो 41 आएगा, सो वी नो भाई नंबर ऑफ 2 इंटू 5 कितने पॉसिबल है, सो 9 9 2 into 5s are possible, so 9 zeros are possible, so 9 is the answer for this, got it, so that's how we need to calculate, so 9 zeros, ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो लास्ट 9 जीरोस है, वो 9 प्रोडक्ट्स है वो जीरोस होंगे इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, you will get more clarity, so the more questions you do the more clarity you will get, so let's see the product of 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into so on into 51, ठीक है, अब see now this product is what 3 into 1, ठीक है, then it is 3 into 2, then it is 3 into 3, ठीक है, into 3 into 4, then into 3 into 5 into so on into, so it is what 3 into 17, ठीक है, so 3 into 17, so 3 to the power 17, 3 to the power 17 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on into 17, ठीक है, so 3 to the power 17 into so on into 17, so this is consecutive series, consecutive series, so consecutive series है, so consecutive series में देखो अभी we need to find number of fives, so number of fives is what, जो biggest number of the series 17 by 5, number of fives के लिए, so that is 5 3s are 15, so remainder 2, so 3 आ गया, 3 को 3 is lesser than 5, we cannot further divide it by 5, so 3 5s are possible, that is that 3 5s are possible, and number of 2s is 17 by 2, 17 by 2,
दैट इज 8s are 16, so 1, ठीक है. देन 2 8, 4s are 8, 0. देन 4 4 2, 2 2s are 4, 0. देन 2 2 1 0. सो अब देखो इसको 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 इज 14. सो दिस एक्सप्रेशन इज 3 to the power 17 इंटू, हमें 2s और 5s चाहिए. सो 2s इज 17, राइट. 14 12 सॉरी 10 12 13, 2 to the power 13, ठीक है. 8 प्लस 4 इज 12, 14 एंड 15. अरे सॉरी, अरे 8 प्लस 4 इज 12, 12 13 14 एंड 15. सो 2 to the power 15 into 5 to the power 3. So 5 so to 3 5 to the power 3. So now we know 3 2 into 5s are possible. 3 2 into 5s are possible. So 3 zeros. So 3 zeros are possible. ठीक है, 3 zeros are possible. ठीक है. So 3 zeros is the answer. So if we multiply this entire product, last 3 digits are going to be zeros and उसके बाद कुछ भी प्रोडक्ट्स आएंगे. सो लास्ट 3 digits आर गोइंग टू बी zeros. ओके, सो यू गेटिंग. सो नाउ लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस इफ ऑफ कंसेक्यूटिव सीरीज. सो कंसेक्यूटिव सीरीज का और क्या क्वेश्चंस हो गया. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into so on into 1000. इसका नंबर ऑफ जीरोस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोडक्ट करना चाहिए. सो दैट इज हमें पता है 2s तो ज़्यादा है, वी विल जस्ट फाइंड आउट 5s कितने हैं. सो 1000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 5 2s are 10, ठीक है. फिर 0 0 ऐड कर लो, 0 ऐड कर लो, सो 0 आएगा. सो 200. सो अगेन 200 को 5 से डिवाइड करना है. सो 4s are 25 4s are, सो 40 200. देन 40 को करना है 5 से, 40 डिवाइडेड बाई 5. सो इट इज़ 8s are 40, 5 8s are 40. देन 8 को करना है, सो 8 5, सो 1s are 5, दैट इज़ 3. सो ये आ गया, ये आ गया. सो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, सो 9 4 2, सो 249. So 249 5s are possible in the series. So that is in this series में 5 to the power 249. अगर 1000 को करें 2 को करेंगे, हमें पता है भाई 249 से तो ज़्यादा आएगा क्योंकि फर्स्ट में ही 500 आएगा. सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 249 zeros. So 249 is the answer, 249 zeros. So if we multiply, so last 249 digits is going to be zeros. Okay. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कंसेक्यूटिव सीरीज. सो ओके, सो वी गॉट इट. सो कंसेक्यूटिव सीरीज का वी गॉट क्लैरिटी. सो नाउ लेट्स डू द कंसेक्यूटिव सीरीज में ऑड और इवन का क्या होता है. ठीक है. सो लेट्स से कि ऑड नंबर सीरीज, ठीक है. देन इवन नंबर सीरीज. जैसे ऑड नंबर इवन नंबर का लेट्स डू कि हमारे पास नंबर का सीरीज है. जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन इंटू 100 तक है. ठीक है. सो let's take odd numbers and make odd number series, and let's take even numbers and make even numbers का series. So odd numbers are what? 1 3 5 etc. जो odd numbers है. ठीक है. So odd number series is 1 into 3 into 5 into 7 into so on into 99. ठीक है. इस सीरीज में odd number series is this series. Then even number series is 2 into 4 into 6 into 8 into so on into 100. ठीक है. वो even number series हो गया. ठीक है. even number series, odd number series. ठीक है.
ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज। सो ऑड नंबर सीरीज का पहले देखते हैं, ऑड नंबर सीरीज का। सो ऑड नंबर सीरीज में वी डोंट हैव एनी टूस, ठीक है, यू कैनॉट एक्सप्रेस एन ऑड नंबर इन 2 का मल्टीपल में, ठीक है, जैसे 3 है, यू कैनॉट एक्सप्रेस 5, यू कैनॉट एक्सप्रेस, जैसे 5 के बाद 7 9 आएगा तो यू विल एक्सप्रेस एज 3 into 3, बट देर इज नो 2, इनफैक्ट 99 इज 33 into 33, ठीक है, एंड 33 इज 3 into 11, so you cannot express any odd number in twos, so इस सीरीज में जीरोस कितने आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, because right there are no twos in odd number series, there are no twos in odd number series, hence number of zeros towards the end of odd number series is 0. So there are zero zeros or there are no zeros. So number of zeros is equal to, so zeros in this series is equal to 0, no zeros. So no zeros in the series, because no 2 into 5s are possible, ठीक है, 2 into 5s पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 2s ही नहीं है, ठीक है, 2s ही नहीं है, बट 5s पॉसिबल है, 5s इज जैसे 15 इज एन ऑड नंबर विच कैन बी रिटन एज 5 into 3, 5s are there but 2 into 5s are not there, so 2s are not there, so without 2s there cannot be 2 into 5s, ठीक है, without 2s there cannot be 2 into 5s, ठीक है। so then let's see even number series, ठीक है। so let's say even number series है 2 into, so this can be written as 2 into 1, ठीक है, then 4 can be written as 2 into 2, then 6 can be written as 2 into 3, then 8 can be written as 2 into 4, ठीक है, so on, and 100 can be written as 2 into 50, ठीक है। so that is, so अब देखो ये 2 into 1 2 into 2 वो ऊपर वाले जैसे एक्सप्रेशन हो गया, so 2 to the power 2 कितने बार 50 टाइम्स आएगा, 2 to the power 50 into 1 into 2 into 3 into 4 into so on into 50 तक है सीरीज। so this is consecutive series, so consecutive series के we need to find number of 5s and number of 2s, so number of 5s is 50 जो बड़ा नंबर है divided by 5, so 5 10s are 50, so 10 again can be divided by 5, 5 10, so 2s are 10, so 2s, so number of 5s is 2 to the power 50 into 5 to the power 12 into 50 by 2, so number of 2s इधर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2s तो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ 5 से, so number of 5 से हो जाएगा, so number of zeros towards the end is equal to 12 आएगा, ठीक है। so that's how, so कोई भी odd number का सीरीज हो, so from this what important point we need to make is कोई भी odd number का सीरीज है number of zeros is going to be 0, if the series is odd number series then number of zeros are going to be 0, ठीक है। so let's do a question, so let's do note down this question, important question है, this is asked in some exam, important question, so the number of zeros at the end of product 1003 into 1001 into 999 into so on into 123 is, ठीक है। so options are A 224, B 217, C 0 and D is 212, so
what we know this is an odd number series, a odd number, odd number, odd number, odd number. So on, so इधर से आएगा 997 इंटू 995, सारे ऑड नंबर्स आएगा. सो ऑड नंबर सीरीज है. वी नो ऑड नंबर में नो twos are possible. So when no twos are possible, no 2 into 5s are possible. So when no 2 into 5s are possible, so the number of zeros is going to be 0. So option C is the answer. ठीक है, number of zeros at the end of product. So answer is C. Got it? Then let's see. Got it? So that is odd number series का number of zeros. कोई भी odd number का series multiply होता है, so number of zeros होता है, ठीक है, number of zeros होता है 0. That because 2 into 5s are not possible. No 2 into 5s are possible. So let's deal with another expression. So ठीक है, ये हो गया. So now the heading is number of zeros in series of 5. Number of zeros in series of 5. So put it as heading, number of zeros in series of 5. ठीक है. So क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से सीधा सॉल्व हो जाएगा. So क्वेश्चन इज 5 into 10 into 15 into 20 into so on into 400. ठीक है. Now we cannot say this is consecutive series because gap 5 है. consecutive series में gap एक एक ऐसा आना चाहिए. ठीक है. So now we how to deal with this. So we cannot count number of 5s, number of 1s, etc. So this can be done as, so 5 can be written as 5 into 1, 10 can be written as 5 into 2, 15 can be written as 5 into 3, 20 can be written as 5 into 4, ठीक है, 2 into so on into 400 can be written as 5 into 80, 5 into 80. So 5 to the power 80 into 1 into 2 into 3 into 4 into so on into 80. ठीक है. So 5 to the power 80 into 1 into 2 into 3 into 4 into so on into 80. ठीक है. So now अब this is consecutive series. consecutive series of natural number जहाँ gap 1 1 होता है, that is consecutive series. ठीक है. सो अब कंसेक्यूटिव सीरीज में वी नो वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ फाइव्स. अब इधर यही आता है. सो वी इफ वी फाइंड नंबर ऑफ फाइव्स, सो दैट इज 5 इज 80 by 5. So that one 5, so 306 is 30. So 16 we need to divide. So 16 divided by 5. So 5 3s are 15 and 1 is the answer. So 16 and 3. 16 और 3. So 16 plus 3 that is, so इसमें so 5 to the power 80 into 5 to the power 19 into फिर अब हमें पता है here 5s are more, so we need to find number of 2s also. ठीक है, number of 2s find out करना है इधर because 5 से 80 plus 19 that is 99 5 से. so अब 2s ज़्यादा होगा तो 5 के लेंगे. so we need to find number of 2s also. so here number of 2s is 2 by 80. so that is 40. 2 40s are 80. then 40 we need to divide it by 2. so 2 2s are 4. so 0 that is 20. then 20 divided by 2 that is 2 10s are 20. so answer 0. then 2 10 से करें तो 5 10 0. so 2 5 को भी करना है. so 2 divided by 5. so 2 2s are 4. remainder is 1. then 2 से कर लिया. so 1 2 0. so 40 plus 20
60 plus 10 is 70, 70 plus 5 is 75, 75, 76, 77, 77 plus 1, that is 78. So 2 to the power 78. So now, so we got 5 to the power 80 plus, so we know surd से formula क्या है, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n आएगा. So 5 to the power 17 plus 80 plus 19 is 5 to the power 99 into 2 to the power 78. So since 2 powers कम है इधर, ठीक है, 2 powers कम है, so 78 zeros are possible. 78 zeros, जो भी जिसका भी पावर कम होता है उतने जीरोस पॉसिबल है, बिकॉज उतने 2 इंटू 5 पॉसिबल है. सो 2 इंटू 5 कितने पॉसिबल है इधर, 78 2 इंटू 5 पॉसिबल है. सो 78 zeros possible. So 78 is the answer here. So that is number of zeros in 5 series में we need to get number of 2s because 5s बहुत होंगे, ठीक है. Remember, so let's do one more question, you will get more clarity. So question is this. So question is 5 into 5 का series है, 10 into 15 into 20 into so on into 600, ठीक है. So now this series is what, 5 into 1, ठीक है, then 5 into 2, then 5 into 3, then 5 into 4, ठीक है, into so on into 600 by 5. So that is 5 into 120, ठीक है. So अब देखो 5 to the power 120, 5 to the power 120 into 1 into 2 into 3 into 4 into so on into 120, ठीक है. So ये हो गया एक्सप्रेशन 5 to the power 120 into 1 into 2 into 3 into so on 120 तक. So now do we need to find number of 5s? No, 5s तो already 120 है, इसमें और 5s आएंगे. So we need to find out number of 2s. So number of 2s is 120, ये number divided by 2. So 6 these are 120, ठीक है. Then 60 divided by 2. So 3s are 30s are 60, 2 30s are 60, 0. Then 30 divided by 2. So 15s are 30, option 0. Then 15 divided by 2. So 15, 2 आएगा, 7s are 14 आएगा, remainder 1. So then 7 by 2. So 6 3s are 2 3s are 6 आएगा, remainder 1. Then 3, this 3 would be divided by 2. So 3 2 1s are 2. So remainder 1 आएगा. So this one cannot be further. So 2 से कम है. So answer would be 60 plus 30 is 90. 90 plus 15 is 90 plus 15. So 90 105. 105 plus 7 is 122. 122 plus 3 is 1. सॉरी हमने कुछ गलत किया क्या, ठीक है. सो 60 प्लस 30 is 90. 90 plus 15 is 105. 105 plus 6 is 105 plus 6 is 110. 110 plus 2 112. 112 113. 113 plus 3 is 116. So 2 to the power 5 to the power 120 into 2 to the power 116. 116 into इधर भी 5s भी आएंगे. 5s कितने आएंगे, सो 5 to the power 120. So 5 2s are 10, 2 0 4s are 20. So 24 आएंगे. Then 24 divided by 5. 5 4s are 20 and remainder 4. So 24 plus 4 28. So 5 to the power 28 और आएंगे. So number of zeros is जो 2 to the power में कम है, बिकॉज इधर 120 plus 28. So it would be 5 to the power 148 into 2 to the power 116. So 5 into 2s कितने पॉसिबल है, 2 into 5s. 2 into 5s पॉसिबल इज 116. So 116 is the answer. So अगर इसको डिवाइड ये मल्टीप्लाई करें, सो लास्ट 116 डिजिट्स आर गोइंग टू बी जीरोस, ठीक है. सो दैट इज द थिंग विथ पावर 5, ठीक है. पावर 5 का मल्टीपुल का आंसर, ठीक है. सो सिमिलरली
ठीक है। सिमिलरली देर इज, ठीक है, दिस इज 5 सीरीज हो गया। देन लेट्स सी फॉर 10 सीरीज, ठीक है, 10 का सीरीज का देखते हैं। सो दिस इज अनदर मॉडल, दैट इज नंबर ऑफ zeros in series of 10, in series of 10. So अब देखो क्वेश्चन इज 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू सो ऑन इंटू 1000, ठीक है, 1000। अब इसको कैसे लिख सकता है, इसको लिख सकता है 1 इंटू 10 या 10 इंटू 1, ठीक है, 10 इंटू 1, देन 10 इंटू 2 इंटू देन 10 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 4, ठीक है, इंटू सो ऑन इंटू 10 इंटू 100, ठीक है, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 इज 1000, ठीक है। सो दैट इज 10 टू द पावर 100, 100 टाइम्स 10 आएगा, ठीक है, 10 टू द पावर 100 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू 100, ठीक है। सो 10 टू द पावर 100, ठीक है, इंटू प्रोडक्ट ये आ गया। अब वी नीड टू काउंट कि भाई नंबर ऑफ फॉर टूस क्या है, नंबर ऑफ फाइव्स क्या है। नाउ अब इसमें टेंस में यही डिफरेंस है। सो दिस 10 टू द पावर 100 है, इसको वी कैन राइट इट एज सो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ठीक है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। सो नाउ 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। सो 10 टू द पावर 100 इज इक्वल टू, दैट इज 2 इंटू 5 टू दी पावर 100, ठीक है। सो नाउ अब देखो 2 इंटू 5 टू दी पावर 100, 2 टू दी पावर 100 इंटू 5 टू दी पावर 100, ठीक है, 2 टू दी पावर 100 इंटू 5 टू दी पावर 100, ठीक है। सो इतने 2s आ गए, इतने 5s आ गया। नाउ इस एक्सप्रेशन में दिस इज कंसेक्यूटिव सीरीज, फिर ये कंसेक्यूटिव सीरीज है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट इसमें 2s कितने हैं, 5s कितने हैं। सो 5s कितने, फाइंड आउट इज 100 by 5, सो 2s are 10 and 20s are, so 5 20s are 100, then 25 5 4s are 20, so further cannot be divided, so 520 into 5 to the power 24 आ गया, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, नंबर ऑफ टूस भी फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें पता है सीरीज में बाई टूस तो बहुत होंगे, ठीक है, ऐसा काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो 5 टू दी पावर 100 प्लस 24, सो 5 टू दी पावर 124 आएगा, ठीक है, इंटू 2 टू दी पावर 100 प्लस बाई 24 से तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, बिकॉज देखो 100 50s आर 100, सो इधर ही 50 हो रहा है टूस, सो 150 से ज़्यादा हो गए, सो 124 zeros because 124 2 into 5s are possible, so 124 is going to be the answer। so अगर इसको मल्टीप्लाई किया लास्ट 124 डिजिट्स आर गोइंग टू बी जीरोस। सो अब यही याद करना है। सो 10 का नंबर ऑफ जीरोस इन सीरीज ऑफ 10 में, सो वी नीड टू गेट इस 10 का भी 2 into 5s, ठीक है, इस 10 का भी 2 into 5s, सो दिस 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5, 2 into 5 to the power 100। so let's do one more question, you will get more clarity, ठीक है। let's do one more question, that is 10 into 20 into 30 into so on into 1500, ठीक है। so now this can be written as 10 into 1 into this can be written as 10 into 2 into this can be written as 10 into 3, ठीक है, into so on this can be written as 10 into 150, 10 into 150, so 10 into so on, ठीक है। so this is 10 to the power 150, 10 to the power 150 into 1 into 2 into 3 into so on into 150, ठीक है। अब इस 10 को we can write it as 2 into 5, so 2 into 5 to the power 150 into 1 into 2 into 3 into so on into 150। अब इस 150 का नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करो, ठीक है, नंबर ऑफ 5 दिस इज कंसेक्यूटिव सीरीज,
consecutive series, and so consecutive series number of 5s 5 divided by 150, so 5 3s are 15 and 0 0 आएगा, so 30, so 30 further divided by 5, so 6 are 5 6 are 30, 6 5s are 30, so then 6 is more than 5, so 6 5, so that is 1, so that is 5 1 remainder, so 30 plus 6 plus 1, so 37, so it is 2 to the power 150 into 5 to the power 150 into, so इसमें 5 to the power 37 into 2s तो ज़्यादा ही होंगे, so answer is 150 plus 37, so 150 plus 37 is 187, so 187 zeros are possible because 187 2 into 5s are possible, so 187 zeros are possible towards the end of the product, so इस product का last 187 digits जो है वो zeros होंगे, 187 zeros, ठीक है, so that is the thing, ठीक है, so ये है number of zeros, ठीक है, so then let's do few more questions, few mixed series का number of zeros in mixed series में करते हैं, so heading लगाओ, heading number of zeros in mixed series, that is different types of series आता है, so question note down, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है बिकॉज कॉन्सेप्ट सेम है, 2 into 5 लाना है, like from different types of, so how many 2 into 5s we get from the series, so 1 into 3 into 5 into 9 into 11 into so on into 999 into 128, ठीक है, number of zeros, so if we see this is what, this is odd number series, and we know odd number series there are no twos, so no twos, so इसमें no 2 into 5, so no 2 into 5s in this entire series, then let's take for this number, ठीक है, अब इस number का क्या है, so 128 is 2 into 64, then 64 can be further written as 2 into 32, then 32 can be further written as 2 into 16, then 16 can be further written as 2 into 8, then 8 can be further written as 4 into 2, then 4 can be further written as 2 into 2, ठीक है, so now let's see number of 2s, that is 1 2 3 4 5 6 7 2s, that is 2 to the power 7, and इसमें 2s कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें इस प्रोडक्ट में 2s कुछ नहीं है बट 5s तो है, सो इधर एक 5 है, देन 15, ठीक है, 15 आएगा, सो जैसे 5 आएगा, सो दैट इज 1 5 एंड 15 इज, सो 15 आएगा दैट इज 5 into 3, फिर एक 5 आएगा, देन 25 आएगा विच इज 5 into 5, सो 2 5s आएगा, देन 35 आएगा दैट इज 7 into 5, so फिर 5 आएगा, so there would be many 5s in the series, so there are many 5s and 2s in the entire series is these 2s, so 5s बहुत है, 2s 7 ही है, so 7 would be the answer, so 7 would be the number of zeros, अगर इस expression में last 7 digit would be zeros, ठीक है, so that is the answer, so 7 zeros towards the end of the product, you are getting, so this is mixed series, एक odd number series है, फिर एक even number बीच साइड में डाल दिया, so odd number series का 0 आएगा, so इसमें 2s आएगा, तो 2 into 5 है, so 5s तो इस series में बहुत है, so we are getting that, so again very easy question and important question है, these questions can be asked, then again take this question, that is series 71 into 72 into 73 into so on into 79, अब देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 79 डिवाइडेड बाई 5 कर लिया, 5s फाइंड आउट कर लिया,
नहीं कर सकता है, बिकॉज टू फाइंड दैट वो 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके सारे कंसेक्यूटिव सीरीज, सो 1 से शुरू होना है, दैट इज कंसेक्यूटिव सीरीज, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर सीरीज। अब देखो जैसे जैसे कंसेक्यूटिव सीरीज लिखा ना, उधर ये लिखो टू गेट नॉट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज का बात हो रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स तो ये भी है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74, ठीक है, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेक्यूटिव सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो ये हेडिंग में ये भी लिख दो कंसेक्यूटिव सीरीज। सो दिस टेक्निक अप्लाइज नंबर ऑफ जीरोस, वो प्रोडक्ट एंड वाला वो अप्लाइज ओनली व्हेन इट इज 1 2 3 सो ऑन कंसेक्यूटिव सीरीज आ रहा। तो सो हियर भी देखो 1 से शुरू होके कंसेक्यूटिव कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है, हियर आल्सो 1 से शुरू होके 100 कंसेक्यूटिवली, ठीक है, फिर 2 से इधर कंसेक्यूटिव आ रहा है, तो 1 से लेके 44 तक कंसेक्यूटिव सीरीज आ रहा है। सो दीज आर कंसेक्यूटिव सीरीज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो कंसेक्यूटिव सीरीज नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से, तब ये ट्रिक लागू होती है, ठीक है। सो वो शायद मतलब मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था बताने के लिए, सो नोट इट डाउन। सो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग उससे आती है, बट हियर तो वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 2s पॉसिबल है। सो इधर 5 कहाँ पॉसिबल है, दैट इज 75 में 5 पॉसिबल है। सो 75 इज रिटर्न एज 5 इंटू 3 इंटू 25, 3 इंटू 25, ठीक है, देन 25 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 5। सो 2 5s आर पॉसिबल, ठीक है, 5 स्क्वेयर है, सो 2 5s आर पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड 2s many 2s are possible, that is this can be written as 2 into 36, then 36 can be written as 2 into 18 and 18 can be written as 2 into 9। so इधर आ गया 1 2 3 3 2s, so 2 to the power 3 या ज़्यादा ही आएंगे। so जैसे 74 है, 74 can be written in 2 into 38 36 2 into 37, right? so 37 is 74, ठीक है, then 76 है, वो भी लिख सकता है। सो 2s तो बहुत आएंगे, सो 5 हमें काउंट करना है, सो 5 इज 2, सो 2 इंटू 5 कितने पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, सो 2 zeros वुड बी द आंसर हियर, ठीक है, समझ में आ गया। सो इधर दिस सीरीज इज कंसेक्यूटिव सीरीज, बट द formula which we use, or the method which we use to find 5s and 2s, so that is followed in consecutive natural number series 1 2 3 so on। मान ले 79 तक दिया होता, देन वी कैन यूज 79 डिवाइडेड बाई 5 करके कितना आ जाता, बट हियर दिस इज लाइक सीरीज है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज में भी ये ट्रिक यूज होता है। सो उधर हेडिंग जब लाला कंसेक्यूटिव सीरीज का, सो पुट इट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज का, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन इज 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू सो ऑन इंटू 69, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएगा, सो नंबर ऑफ जीरोस के लिए वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ 2s एंड नंबर ऑफ 5s। नंबर ऑफ 2s तो हमें पता है हर इवन नंबर में आएगा, सो नंबर ऑफ 5s इज 65 में आएगा। सो 65 में हाउ मेनी, दैट इज 65 इज 5 इंटू 13, so that is only 1 5, further it cannot be divided, so only 1 5 is possible, so 5 to the power 1 possible है, ठीक है, 2s तो बहुत possible है, so 1 0 is possible, so 1 0 is possible for this product, ठीक है। then let's do one more question, that is 121 into 122 into 123 into so on into 130। अब हमें पता है, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है, बट नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू नहीं हो रहा है, सो वी नीड टू फाइंड आउट सेपरेटली। सो नाउ नंबर ऑफ 5s इज 125 में पॉसिबल है, 125 में एंड 130 में भी पॉसिबल है, ठीक है, 125 बीच में आएगा, दैट इज 125 इज 5 इंटू 25, 525 आर 125, देन 525 इज 5 इंटू 5, ठीक है, सो 1 2 3, देन 130 इज 13 इंटू 10, देन 5 into 2, so 5,
सो 5 कितने पॉसिबल, 1 2 3 4, ठीक है 130, सो 5 टू दी पावर 4 एंड 2s हमें पता है इवन नंबर, सारे इवन नंबर्स में 2s पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी, सो 4 zeros, सो 4 zeros, 4 zeros आर पॉसिबल, 4 zeros, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। सो that is it. So in next class we will deal with numbers of number of zeros in factorials and number of zeros in power भी आएगा, तो उसमें भी देखते हैं in next class. So that's it for today's class. Thank you very much for watching. Bye. See you in the next class.